Having the today's session. Yeah, we will be starting in another 4-5 minutes. Today Okay. was from 5 p.m. It was a bit of a shifting. Yeah. Oh, okay. Because I tried at 4 o'clock, but I think that was not Yeah, we working. had sent communication to all our registrants that today it will be from 5. Perhaps that. Oh, acha, I didn't receive that. Okay. Sure. So you are starting at 5. Should I stay along or? Yeah, please. Okay, we will be having Madam Nirupama Soundararajan and Okay. then Amitabh Nagji and then Professor V.R. Desai will be closing. Okay. Right. Thank you.
Namaskar, hello and welcome to the day 3 of the World Education Forum 2023. Starting from the foundations, which was on 15th of January when Professor S.S. Mantha and M. Nageshwara Rao Garu, they laid in elaborate details a kind of an Indian educational program which can be emulated globally. This is for the first time at Rethink India. We are trying to say that we had the spirit of learning from the whole world, Ano Bhadra Krato Yantu Vishwataha, but in the run-up to the International Education Day, which falls on the 24th of January, we asked that when we were used to be called as the Vishwa Gurus, we had a lot to teach to the world. And in that spirit, we asked all our eminent dignitaries across that what are some of those practices and policies and programs which we can really enunciate to the larger global community at large. And Professor S.S. Mantha came with a phenomenal presentation talking about the juxtaposition of the Apara Vidya with the Para Vidya. He laid emphasis on the value centric higher education. Values are taught perhaps at the school level, but when it comes to the higher education, perhaps we really need that larger integrity compact, that adherence to values phenomenally. M. Nageshwara Garu went on and he touched upon a topic about the multilingualism of the country, because the traditional learning systems used to focus primarily on language, literacy, numeracy, which NEP 2020 has also laid a phenomenal emphasis on. And the third part used to be on the vocations. And Nageshwara Garu's criticism was that perhaps the purpose of education is lacking in NEP 2022. He was quite vocal about it. Yesterday, which was the day 2, we advanced this intellectual marathon, and we had a pentat of eminent scholars from across, and
And the theme was all key how higher education can lead to employability, entrepreneurship, how family businesses can be re-engineered with the techno-managerial prowess which we all get. So we had Dr. S. Glory Surupa from the National Institute of it's micro, small, and medium enterprises, and she gave some very starking figures, statistics as to how family enterprises die down. Only 30% of them remain till the second generation, then 12% to 3% till the fourth generation. So the succession planning is something which is quite challenging. And then she laid a very emphatic point on nurturing the baby corns. And in today's era of globalization, where a 1%, the new word order, as we talked in our inaugural session, that the World Education Forum takes inspiration from a similar such forum which started in 1971 in the Alps, Davos, Switzerland, the World Economic Forum. And we said that in the Indic thought, economics is just one of the Purusharthas, and it needs to be qualified with the other three of Dharma, Kama, and Moksha. So in the spirit of the integral quartet, we said that Shiksha, education, is something which tells us that this is a integral quartet. And in the Indic pantheon, we had political ideologies of integral humanism, which says that all our human desires, they have to be based on dharma, and they have to be anchored in dharma, and they should be aspiring for moksha. It is only for those desires, those kamanas, the entire pursuit of economics, the entire pursuit of artha has to be taken forward. And this is perhaps one notion which we at Rethink India Institute feel, and strongly we are trying to advocate that this can really assure a VUCA era into the sthirta, the stability part of it all. And we have been talking about the fifth industrial revolution, perhaps, which is anchored into these Indian intellectual thought processes. So, and then yesterday, Professor Onkar Singh came further forward and said that fair enough, the whole fetish for techno-managerial education has now got quite skewed towards computer science or information technology per se, and kind of larger challenges which the world is facing today is that emergency summits had to be held in London, where Vice President Kamala Harris and Prime Minister Sunak led that and talked about the AI security, the kind of challenges which this emerging facet might be presenting. But Professor Onkar Singh talked about that the cyber physical integration, which is all about Industry 4.0, it still needs in the Indian context the merger of, I would say, the engineering disciplines of mechanical, civil, and chemical, the three evergreen ones which we all used to cherish and take forward. And then he said that there is perhaps an aspiration mismatch. The students at large are coming perhaps from the service backgrounds and entrepreneurship, or going nurturing their family businesses, and then their personal linkages with their families is perhaps not so very profound out there. So he was quite, I would say, honest in his admissions, but then he gave us that larger perspective. Then Dr. Anirudh Malpani, he perhaps plugged in what the question, the purpose and nature of education, what M.N. Nageshwara Garu on day one, he said that Macaulay was very clear about it. He said that we want to create a class of Indian citizens who are just Indians in name only, and they have their taste and their, I would say, their aspirations entirely British, because they wanted a class of interpreters for their knowledge. So Dr. Anirudh Malpani said that thinking for ourselves, that is perhaps his core central message, was that needs to be the purpose of education. And in today's time, when all kind of these are fabulous of the times which we are all in, we can see it in a constructive fashion. Lots of learning opportunities, lot of explorations. And so this positive view was further strengthened by Madam Rajita Kulkarni, the Honorable President at Sri Sri University, where she gave very elaborate, I would say, five-pronged pedagogy which their university is furthering. And these 5 M's, I can say that multi-stakeholder sensitivity,
multi-generational adaptability, cultural adaptability, multi-career possibility, and discrimination of choice, right over wrong, moral over immoral. So that was the deliberation which we had. And finally, we had EdTech Doyen, and we had raised the challenge, the thing that how to make higher techno-managerial education affordable and accessible. And we had Mr. Aurobindo Saxena, and then yesterday's session culminated in a very vital thing that perhaps the contours for future, they lie somewhere in our past. We used to have a very elaborate higher education system with global universities where scholars from all over the world used to flock us. But then something transgressed. We became irrelevant. We got invaded. Some newer developments happened. So, and then one very starking figure which he shared, that the 42 Australian universities have a total revenue share of around 40 billion. But the 1,200 odd universities in the country, they are still not touching upon that level of revenue. And in fact, one other interesting statistics was shared that earlier we used to invoke the Australian population in the context of Indian Railways, that Indian Railways ferries that many passengers as the population of Australia. But then 27%, what is the GER today? Mr. Saxena talked that this is the around the quantum of Australian population. So that is where we are at present. So today's day 3, which we are calling as the focus, because on 11th of December, which Rethink India has been commemorating as the 5th Estate Day since 2017, when we felicitated President Pranab Mukherjee as the education president in the presence of 108 Kulpatis and Kuladhipatis across the country. As a New Year resolve, we have chosen to refer to our vice chancellors as the Kulpatis, a kind of an Indic submission we want to make. So Prime Minister came all of a sudden, and he in fact addressed the entire Fifth Estate of the country in 2023. And it was the day when we had our own Fifth Estate at India International Center, Delhi. And Prime Minister talked about, he gave the Vikasit Bharat Sankalp Yatra, Sankalp to the academia at large, and especially to the higher education at large. And today, the focus of day 3, the 3 themes, which are 3 eminent speakers this evening would be touching upon. And the first one is how to interface higher education institutions with government development programs and agencies for rounded efficacy, employability, and entrepreneurship. How we can plan, design, monitor, and audit the developmental programs down at the districts. There's a lot of talk about the academia industry interface, but then government agencies are perhaps one of the largest spenders in a lot of programs. A lot of techno-managerial skill is required out there. So the question and I would say the possibility which we want to raise to our first eminent speaker this evening, I would like to invite Madam Nirupama Soundararajan, who is Honorable Partner at the Policy Consensus Center. She adored as the Chief Executive Officer at the Paheli India Foundation for 8 long years, and she moved on to Policy Consensus Center now. An eminent economist and eminent policy observer. And she has been working with the former Niti Aayog chairperson Rajiv Kumar sir as well. So she has those very deep insights as to what are the constraints, what are the challenges from a policy perspective that can the higher techno-managerial institutions down the districts. I'm not talking about designing a Atal Setu of Mumbai. Perhaps that's a different level of engineering. That's a different level of challenge which is perhaps required. But at the district level, with the district development officers, with the host of projects which are going over there, as simple as testing the water quality in a civil engineering lab of an institution, the water quality across a district per se. Because development, Vikasit Bharat would happen only when 672 districts would be developing across developmental parameters. And can this huge techno-managerial talent pool, what we have down the districts,
like the last count that 412 districts of the country have at least one engineering college over there. So this is the larger question, and since Prime Minister himself invoked, I would say, the academia to come and participate, because when we see the West, a lot of new ideas, a lot of new thought processes, a lot of original things are coming from the universities. But here we are perhaps the consumers of the outside ideas, and perhaps our official bureaucracy, I would say, it has much more sway rather than the academia and the developmental design per se, the various contesting, I would say, the design parameters and things like that. So in this larger context, I would like to invite Madam Nirupama Soundararajan to deliver her World Education Forum address. And welcome, ma'am. Thank you so much. There. Sorry, you'll have to excuse me. I have a bit of a cold. But thank you very much for having me here. I think it's a very important topic and it's a very interesting topic as well. So I'll continue from where you probably left off, which is basically how can we create higher education institutions and create higher education pedagogy that will actually help in grassroots development as far as India is concerned. And I think you picked a great unit of development as district for that purpose. And I'd like to break this into 2 or 3 aspects. The first bit is, let's talk about access to education, access to higher education. Now, as you said, in most places, you may probably, every district probably has a, engineering college. Some of them between themselves may also have a medical college, but that is only one aspect of it. Now, is it feasible to open multiple arts colleges, multiple engineering colleges, multiple medical colleges in every district? I don't think so, not today, largely because even if you manage to build the infrastructure, you're not going to find the teachers to actually populate and render education. So having said that, let's move into the second point. So what becomes important? The problem I think that we have, and this is true not just at a district level, it is true even at a national level, is, you see, with remunerations, and let's not shy away from that, because at the end of the day, all of us, if we're spending an X amount of money in educating ourselves and for other reasons and commitments, we also want to make a certain amount of money. So remuneration does play a very important part. Now, the problem is in India, I think, and I'm saying this more from a practitioner point of view than as a policy person, but if you even look anecdotally, the same job, which requires probably same skill set, etc. If you look at the pay scale and let's say, and you divide it as per where you're situated. So if you are, let's say, let's take something even as simple as a retail store, a jewelry store or any kind of retail store where you are in the front end. What is the kind of pay that comes in if you were in a mega metro versus a tier 2 versus a tier 3 versus, let's say, in a district somewhere or in a village? There is a pay grade difference, and the pay grade difference is not necessarily because your skill sets are different for the people who are there, but largely because of the location. Now, this becomes a little bit of a problem. Why is this a problem? Because at the end of the day, this then becomes a huge reason for people to move out of where they are, where they have studied, a place they're familiar with, to somewhere else. I mean, at the national level, it's also why you have so many people moving out of India and settling abroad, because the pay is more attractive. For the same kind of skill set, or maybe even less, you get better pay. I think this is a distortion that we need to look at. I don't think many people have looked at it in this way, but we do. Why is this important? This is also important because when you have people who are familiar with the surroundings, who know what the problems are from where they come, and therefore are motivated enough to go back and help develop that area further, their district further, their village further, their own area where they live further, the effect is better because there is an intuitive understanding of their surroundings that they have got over the years of living there that no other kind of education, formal education, can provide. It comes from experiences, it comes from having looked around you and having grown up in that milieu. How do we get people to stay back and help? How do we get people, even if they move out to get a education elsewhere, to come back and work here?
Remuneration certainly is one of the biggest ways to attract them. But this is one thing that I think somewhere education fails to capture. So no matter what the quality, no matter how good, no matter where you're getting it from, how do we get people to move to grassroots to actually work? Now, this is a fundamental problem you have across any kind of system. Take banking sector. Your rural posting, in most cases, is almost referred to as a punishment posting because you're cut off. Now, that sentiment which is there somewhere needs to change for us to realize the potential of what we can do for our districts and how you can actually transition that district or that unit of development, whichever way you want to take it. Even if it's a village, how do you get out of that kind of mindset? I think this is something that we need to understand, and this is not directly linked to education per se, but it has got to do with remuneration, and it is what we are setting there. As a result, therefore, so given that these are our constraints, what can we do? Because this involves a mindset change. It's not something maybe that can happen overnight or even maybe over the next 5 years or so. So given these constraints, what is it that we have? Can we make remuneration more attractive for these kind of locations where you attract the best talent to work? Sorry, instead of paying them a lower remuneration, can we attract them by paying them maybe a higher amount? So that is one aspect that we need to look at. Secondly, and I think now let's come to the education bit. So who are the people who actually run most of the district as far as an administration is concerned? They come from your civil services. I think it is time for us to reevaluate the curriculum that is being taught in civil services. Your exam, etc., all of that which is there, and while they undergo certain training, is more focused on general knowledge, knowing everything else. But I think sometimes what is required is also certain other kinds of basic skills. So, for example, in academia today, one of the biggest things, and this lends directly to your development programs that are being implemented, where do we actually fall short? We fall short with realizing the potential of development programs because we don't monitor and we don't evaluate outcome. Program we have created, we said it is rolled out, and somewhere there everyone says, I have done my bit. Now, we don't really constantly see whether this is being implemented correctly. We don't see whether it is actually reaching its objective. What are the kind of changes we need to make? What are some of the more unfortunate, consequences of this? What are the more fortunate consequences of this? That kind of framework is not something that we are taught here. Not just for the IASs and the people at the government services, but this is actually a huge demand in industry today per se, and number of education institutions teaching this, whether it's at the higher education or even at your master's level in that sense, is sadly lacking. So we seem to actually play catch up more and more, when actually in this situation we should have been leading the forefront, because this is such a huge necessity for us in India. But how can we therefore look at education and pedagogy no matter at what level? And I'm somebody who believes higher education is not just going and getting your bachelor's or your master's, it's a lifelong learning. You keep learning, you have to keep learning. Higher education is about learning constantly. So how do we do that? How can we make sure that anybody who joins any place is constantly learning, is provided the skills that is there? Because let's be honest, I feel it today at my age. I know I'm completely outdated on many things, which a lot of people who are much younger than me by about 10, 15 years probably know I don't. But for me to stay relevant, for me to know and how to adapt to a changing kind of economy, changing paradigms within the economy, one has to keep learning and keep oneself updated. How do we create an incentive for that? I think that aspect of constant learning, upskilling, constant learning is missing, both in terms of higher education, anywhere. But this is particularly necessary for government, people who work in the government, also because they are at the end of the day the last mile implementing agency for development to happen. So for them, this becomes absolutely necessary. And I think there is a huge gap there.
So which is why even today in policy making, when we meet and usually in my line of work, we have the opportunity to meet a whole set of, policy makers across, various sectors, various kind of backgrounds. But the ones who constantly kind of stick to you, who you say, oh, this person is very good, are the ones who are proactive. And what does proactive mean? That when I go there, they're either keen to learn and will tell me, I don't know this sector, so can you help me understand? Or they're people who've done their reading, or they're people who constantly learn. And you can see the difference. There is a certain kind who says, I'm here for my 5 years, I'll do whatever is required, sign the papers and move on. But there are others who take it a little more seriously. So in terms of the constant learning, the curiosity, how do we keep curiosity alive? Now, that is the other big thing. I think, as you said, this gentleman who I think spoke yesterday, you mentioned, spoke of being able to think for ourselves. I think that's very important. At one point, critical thinking was considered a soft skill. Today, it's become an essential skill. We have to be able to think critically. So as a person, as a bureaucrat or somebody at a development, at a unit of development who's the final mile implementer, what is it that you're trying to tell them? Is it to blindly follow what gets handed down? Or can you look around you and use some of your critical skills? Understand it, localize it, see what you can do. I think that's the other big gap that exists today as far as education and government interface is concerned. Lastly, I think with the government also, now I understand that the government cannot do everything by themselves, and I think it would be wrong of civil society to expect that. But we do have a country which has a whole capability and people, whether in academia or whether in other areas, who are experts, starting from industry to, other think tanks to many other people. Now, if you look at it as coming from a think tank, been in a think tank for 8 years, and now I've moved to my own, setup, I can tell you that in most cases where governments hand out tenders for certain projects, right, it ends up going to agencies of a small crowd. There are 5 or 6 and it constantly goes there. Probably because for smaller institutions, the cost component is important. We don't have the kind of cash flow that's required to say, ki hum kaam pura kar denge, aap baad mein de do. But what also happens there becomes a certain sense of homogeneity in approach. When the same 5 people are looking at everything, where is the creative thinking? Because you've gotten so used to it, you will pick one, you will make certain changes and put it in the other and go on. So how do you then bring more people into development? Because development today and problem solving requires a certain amount of brainstorming, requires innovative thinking, requires out of the box thinking. But if we keep going back to the same 4, 5, 6 organizations, whoever they are, where are we going to get that difference in thought process? So I think the government also needs to give this a little bit of consideration and see how they can expand their pool. They will obviously say that we do it through RFP, etc., all of that, which is fair. They have a process. But are those RFPs truly geared towards, egalitarian enough to allow for the smaller institutions to also apply and work? If you can't do it directly, can we at least make sure that there is some kind of mix so that you have different ideas? So I think these are some of the key elements that I would like to kind of talk about it. Address today and bring to the fore in terms of what requires attention. I'll leave with the last thought here. Now, we know as a government, we have a development agenda. For example, we know that we have today a net zero commitment that we have to do, which means that we have a lot of scope for innovations in clean energy, in green tech, in things like that. One, we know that we're doing fantastically in space. So that's a great area where a lot is happening. Similarly, we have very clear national agendas. Now, is our education oriented towards those? So do we have, you may have, courses which are oriented towards astrophysics and things like that, and rocket engineering and, space tech, everything. But where are the specializations? Especially because these are areas. So are we creating institutions which can support this?
Your national agenda, these are not short-term agenda. You want to create technology, you want innovation. Where is the space for that? I think I'd like to leave these questions open for discussion maybe, and for anybody else also to pick up and answer. But I believe these are our constraints that we need to look at. Thank you. You really touched upon the entire spirit of what we really wanted a veteran policy, I would say, curator to bring it across. And the catch lies in the pool of 5, 6 consultants out there. See, contractors are one part which have to execute a particular project, but developmental design per se, like the aspirational districts program. So in India, the diversity is so huge that within a district itself, the challenges from one tehsil to the other tehsil are perhaps differentiated out there. Absolutely. So I would like to cite two cases. Like one was like the National Institutes in Singapore. We have seen them that the students over there are collecting data sets at the Singapore Metro. If they have to do some study, what kind of user definition or things like that. So the students are put up, they are put out into the fray to collect the data from the field. And like, for example, the Swachh Bharat Sarvekshan reports, what we saw, we are so very clear that what was the army which collected that data, which did all that analysis. So can this techno-managerial student community can be engaged in some way or the other so that they get a hands-on experience of the engineering or technological discipline they are studying. We have been joined in by Professor Venkappa Desai, sir, the Honorable Director of IIT Dharwad. I will request sir to also join in this part of the discourse out there. The second is my personal example that I served in the Braj region, and we created an elaborate tourism master plan for the whole region. And in that course, the policy had a gap, and the consultants out there, they created an institution of a city anchor under the Hriday scheme. They said that any organization which has been there in the fray, it can be given as a kind of an support to the administration, to whatever. So my question is, can there be a policy mandate whereby higher techno-managerial institutions, they can be picked up because they can be the seats of developmental knowledge? Because somewhere or the other, governmental departments, their agility, if they can get additional institutions, additional departments which can host the content foundation of that particular district on a particular thematic or a smaller unit of that district. So they can come as a standing council, to the district administration. As you said, that the officers come and go. One officer comes, he has one thought processes, howsoever cerebral they are. So the idea is how to innovatively deploy the student community or the infrastructure of these. For example, IIT Kanpur is the associate with Clean Ganga campaign, for that matter. All the water samples come to the civil engineering department and they are treated out there. In our case, we took the help of IIT Roorkee, for that matter, for the time sequential study of the destruction of the Braj Hills. But that was a one-off, and that MTech dissertation was submitted in the Supreme Court, and the hills of Braj could be protected. And Professor Desai and others, they really supported that campaign in a big way. So can it be institutionalized? That was a one-off kind of an experiment. But down the districts, say from Niti Aayog's perspective, that every developmental program which is being deployed need to have one or the other higher techno-managerial institution as a standing council, as a consultant, so that whatever developmental challenges we face, the students learn in the fray. They can audit, at least they can snatch photographs. They are the ones who cannot be controlled, so the system becomes accountable further. So this is a question I would like to pose to you, and also Professor Desai, who has joined in. And also I would like to welcome Amitabh Nag, sir, the Honorable CEO of Bhashini, which is revolutionizing the multilingual conversations in the country. So over to Madam, this quest. Yeah. Thanks. No, I think it's a great idea, and I don't see why it cannot be institutionalized. It just requires a little bit of thinking. See, for example, if you look at a district, and in that district, if you were to map the kind of educational institutions, vocational training centers, all of that, you're talking about a district, you partner with each one of them for maybe 1 or 2 projects.
depending, and it also allows, let's say, the opportunity, as you said, for students to learn on the job. It's almost like an internship. You can arrange for a certain kind of cyclical internship for students on a regular basis, that everyone goes, spends, let's say, 2 days, 2 weeks, whatever, 2 months in a cyclical manner with the ministry during the course of their education, so that they're able to learn. As you said, I think there are many ways in which it can be done. I think the first way is for district administration to understand that there is a possibility of actually, universities and institutions of varied levels. I mean, of course, everyone goes to the IITs and IIMs and ISBs, and that's great. And of course, they can help a lot, and they have been. But there are other institutions. Forgive me. Yeah. Sorry. There are other institutions that can also do it. Maybe not at the same level of cerebral thinking in some cases, but there would be for many other. I'll give you an excellent place where this has happened, where governments have worked very well with institutions, has been actually in agriculture. Your agriculture colleges invariably work very closely with government departments in terms of soil testing, in terms of extension services, in terms of agricultural practices. That model has actually done well. At least wherever I've gone, when I ask, they say there is a lot of support that comes from the agriculture colleges. So it's worked there. There's no reason why this can't be done anywhere else, even if it is at a small scale. But this is something that I believe can be very easily institutionalized. It doesn't require any kind of major framework. It just requires a couple of people to be proactive in their approach to say, how can I engage with you? I think if a conversation starts where district policymakers engage with institutions in their vicinity, I think ideas will flow. There will be plenty that one can look at. This is truly terrific. But then in a developmental space, what we have, the initiative is largely top down. And perhaps the focus today, what we kept was localization, regionalization, multilingualization, because language is the window to the culture and the developmental challenges what we have from one state to the other, one district to the other. They are quite differentiated, and Madam Nirupama Soundararajan has really presented it well, that theoretically and technically there is nothing which stops this academia government, and especially in the light of Honorable Prime Minister's mandate to the fifth estate, the academia, to join in the Vikasit Bharat Sankalp Yatra. And all through the conversations which we had in the past 2 days, the focus had been that higher education has to play a pivotal role in exponentiating India's economic might, because that's where the ideas would come through, which can be we have Amitabh Nag Sahab, who is I would say mainstreaming artificial intelligence, the large language models in the language translations. I personally worked at Media Lab Asia, IIT Kharagpur, under Professor Anupam Masu and Professor Sudeshna Sarkar. So the language technology has come all the way over here, and it can connect India in a phenomenal way. I would now like to invite my very professor who initiated us with a simple 10 rupee note into the whole spectrum of multilingualism, कि भारत कैसे संवाद करता है, और ये जो बहुभाषीय संवाद है वो जो 10 रुपए के नोट पर ही we can see all our 22 scheduled languages. And Professor Desai is one of the foundational votaries of multilingualism, and his is not a 3-language formula. His is a 5-language formula which goes down to my village, to my boli. So I would request Professor Desai to initiate, unravel this 5-language formula, and which can really, which is so very important, and especially in the age of this artificial intelligence, the large language models. And then we will have Amitabh Nag Sahab, that how the AI can juxtapose with the foundational philosophy of multilingualism, what Professor Desai has to offer. Sir, pranam, sir. Yeah, dhanyawad Raghav Mittal ji, and I hope if I speak in Hindi, I think everybody, it is I speak in Sanskritized Hindi. I prefer to speak in Sanskritmaya Hindi. तो सभी को ये समझ में आना चाहिए. In case कुछ कठिनाई है, कुछ है तो बता दीजिए. I can definitely explain in English also. जी सर.
तो एक्चुअली जैसे राघव मित्तल जी ने बताया, तो हमारे करेंसी नोट में 22 भाषा, 22 भाषा हमारे संविधान में जो उनको मान्यता मिली है, लेकिन 6 भाषा को उसमें अभी हमारे करेंसी नोट में स्थान नहीं है। एक है सबसे पुराना जो है सिंधी भाषा। आप जानते होंगे इन सिविल सर्विसेज उसमें 2 कोड है, कोड नंबर्स है, सिंधी देवनागरी, सिंधी अरेबिक कहते हैं। तो जो सिंधी का भाषी क्या देवनागरी भाषा का, देवनागरी लिपि का व्यवहार कर सकते हैं, या नहीं तो इसको अरेबिक लिपि का व्यवहार कर सकते। तो इसलिए 2 कोड है। तो इसलिए सिंधी भाषा अभी तक के जो है यूपीएससी में है एज 2 सेपरेट कोड्स, लेकिन अभी हमारे इसमें करेंसी नोट में नहीं। दूसरा जो है, जैसे हम आईआईटीज के विषय में बोलते हैं 1G 2G 3G। 1G मीन्स फर्स्ट जनरेशन, जिसमें 5 पुराना आईआईटी, उसके साथ साथ गुवाहाटी और अपग्रेडेड आईआईटी, सेकेंड टाइम अपग्रेडेशन। दैट इज पहले तो शुरू हुआ द करंट आईआईटी रुड़की, आरंभ में शुरू हुआ एज द थॉमसन कॉलेज। एंड आपको पता होगा इन 1847 it was started as the first exclusive technical education institute in the entire British Empire. So, and further upgraded as Roorkee University, then दूसरी बार 2000 में 2000 या 2001 में upgraded as second time upgraded as IIT Roorkee, उत्तराखंड के IIT ऐसे। So ये सब मिलके actually they are called 1G IITs। वैसे 2G IITs, IIT धारवाड़ जहाँ का निदेशक दायित्व मेरा है, तो दिस इज वन ऑफ द 6 3G IITs। तो वैसे हमारे भाषाओं में भी 3 भाषा को वी कैन कॉल देम 2G भाषा, सेकेंड जनरेशन। वो क्या है? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। लेकिन उसमें हम देखते हैं कोंकणी एंड नेपाली दे आर इंक्लूडेड इन आवर करेंसी नोट। जिस 10 रुपए के करेंसी नोट के विषय में राघव मित्तल जी ने बताया, लेकिन मणिपुरी अभी नहीं है। तो कारण है मणिपुरी भाषा में अभी उस समय से अब तक के जो है द कंसेंसस इज इल्यूसिव, एक समान सम्मति के कंसेंसस पर नहीं आ पाए मणिपुरी, इसीलिए मणिपुरी भाषा नहीं है। तो पहला जो है सिंधी, दूसरे भाषा जो 22 भाषा में हमारे इसमें नहीं है तो मणिपुरी, उसके पश्चात तो ये पूर्वी भारत से बोडो नहीं है, मैथिली नहीं है, संताली नहीं है। ये तीनों पूर्वी या ईशान्य भारत के, बोडो तो ईशान्य भारत की भाषा, मैथिली और संताली पूर्वी भारत की भाषा है। और ये जो एक ही भाषा बचा है उत्तर भारत के, डोगरी, जो हमारे कश्मीर के राजा और डोगरा परिवार, डोगरा इससे होते थे, करण सिंह और उनके परिवार है जो है वो डोगरी भाषा। ये 6 भाषा नहीं है, 16 भाषा में एक भाषा बड़ा फॉन्ट में लिखा जाता है, दैट इज हिंदी देवनागरी में। बाकी 15 भाषा छोटा फॉन्ट में लिखा जाता है। मैं हमेशा ये जो इवन इन स्टेट जो है which is है ना in terms of entrepreneurial, it's an excellent state, गुजरात। तो not only that, even whole of पश्चिमी भारत में पंजाब से लेकर पंजाब, गुजरात और कोंकणी भाषी लोग, इवन केरल के लोग, so they are much more entrepreneurial। तो उनका उनकी स्वभाव में ही है this उद्योगशीलता, तो that is entrepreneurship। तो इसके पश्चात भी वहां भी एज ए शॉर्टकट केवल गुजराती में लिखते हैं, क्योंकि किसी भी का प्रांत में जाइए, किसी हर एक को राजकीय दृष्टि से करेक्ट होना पड़ता है। तो इसलिए गुजरात में है तो गुजराती, कर्नाटक में है तो कन्नड़, और महाराष्ट्र में है तो मराठी, केरल में है तो मलयालम, ऐसे वो होना पड़ता है उसी किस्में। उसके बाद ओनली ये जो है दूसरी जो है इंग्लिश। तो मेरा ये जो मूलभूत प्रश्न है
कोंकणी और नेपाली को हमारे करेंसी नोट में इंक्लूजन के बाद देवनागरी लिपि का 5 बार उल्लेख होता है। एक बड़ा फॉन्ट में हिंदी, 4 छोटा फॉन्ट में अल्फाबेटिकली कोंकणी, मराठी, नेपाली, संस्कृत। सर्वाधिक बार 5 बार जो उल्लेख होने वाले देवनागरी लिपि को हम क्या महत्व दे रहे हैं। इवन मेरे होम स्टेट कर्नाटक, जहां मेरा होम टाउन का जो IIT का निर्देशक दायित्व का मेरा है, लेकिन यहाँ भी ये जो है कन्नड़ में लिखो, उसके पश्चात इंग्लिश में। एक विदेशी भाषा को, विदेशी भाषा इंग्लिश, विदेशी लिपि रोमन लिपि, उसको वी आर गिविंग 50% वेटेज। कितना तर्कबद्ध है, ये सोचने का विषय है। और मेरा सभी हिंदी भाषी मित्रों से मेरा आग्रह है, मेरा एक प्रश्न रहता है, आप हिंदी का द्वेष निर्माण करना चाहते हैं या प्रेम निर्माण करना चाहते हैं? निश्चित रूप से हर एक बोलेंगे प्रेम निर्माण करना चाहेंगे। तब मेरा उनसे अनुरोध है, हिंदी को संस्कृतमय करना है। हिंदी को संस्कृतमय करने से ईशान्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, अन्य भारत, उसमें उसको स्वीकृति मिलेगी। आग्रहपूर्वक मैंने पिछले जो मिड फरवरी में मैं एक कुलपति का एक चयन समिति में मैं एक 3 सदस्य एक समिति में मैं भी एक उसके भाग रहा। तो मैं सबसे कनिष्ठ जो आयु वाला, जो जैसे है ना, उम्र मेरा भी आया, उम्र के जगह आयु या वयस, ये जो कहे, ऐसे आग्रह पूर्वक हमको हिंदी को ये करना है। इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन और पॉलिटिक्स, एनीथिंग, एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। एक उदाहरण से मैं करूंगा। मेरा जो है इंग्लिश को कन्लिश बोलता हूँ, कन्नड़ लेपित इंग्लिश। मातृभाषा कन्नड़ है, मातृभाषा का प्रभाव रहता ही। तो वैसे उस समय तमिलनाडु राज्य का नाम हुआ करता था मद्रास। तो उस समय के मद्रास के मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई जी ने, सम्मान्य अन्नादुरई जी ने, तमिलिश में उर्लिश बोलने वाले हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को एक बोला। उन्हीं के इसमें, सी मिस्टर नेहरू, वॉट एवर हिंदी यू स्पीक, I can't make head or tail out of it. But whatever Vajpayee speaks, more or less I can make out what it is. एक उदाहरण से मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। नेहरू जी का हिंदी, अपने मुल्क का हिफाजत करना अपना फर्ज है। अपना मुल्क हिफाजत फर्ज। वाजपेयी जी का हिंदी वही, वो वाजपेयी जी का भी हिंदी है, हमारी देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। तो इसने, इस वाक्य को आई शेयर्ड विथ मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जो हिंदीएतर क्षेत्र से, जो ईशान्य भारत से हो या पूर्वी भारत से हो, दक्षिण भारत से हो, पश्चिम भारत से हो या मध्य भारत से हो। तो वो सब एक्चुअली ये जो है ना, जो हिंदी को, जो उर्दूमय हिंदी से उनको संपर्क है, वो केवल वही है जो है अपना मुल्क हिफाजत फर्ज, इसको समझ पाएंगे उसका अर्थ क्या है। लेकिन बाकी लोग हमारी देश रक्षा कर्तव्य, इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो इसीलिए ये जो है हमारा, ये जो है, ये हमारी ये है जो। और एक मुझे पता चला, अब जो है इजराइल में जो इतने सारे, इजराइल जो है वैश्विक रूप से इजराइल को इतने सारे जो है सम्मान मिल रहा है। इजराइल में मैंने रिसेंटली पढ़ा, इजराइल ने नियरली 170, आई थिंक प्रिसाइजली 169 नोबेल लॉरेट्स को प्रोड्यूस किया। 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ, उस समय देयर वर हार्डली लेस देन 500 हिब्रू स्पीकिंग पीपल। अब ना इजराइल ने उनको आग्रह पूर्वक हिब्रू को राष्ट्रभाषा उसके स्थान देकर हिब्रू को व्यापक रूप से पुनर्जन्म करके अभी ये किया है। उसके कारण ये
तो हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, उनका भी यही एक स्वप्न था कि संस्कृत हमारे राष्ट्रभाषा हो। दुर्भाग्य से उसको नहीं होने दिया गया। इसके कारण हम जो है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और हमारे ही हिंदी भाषी लोग, बहुत सारे लोग अपने ही बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते। और मैंने जुलाई जो अंत में 29th and 30th जुलाई, जिस भारत मंडपम में हमारा G20 समिट हुआ दिल्ली में प्रगति मैदान में, वहां जो है हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से 3 मिनट जो उनके साथ जो है वार्तालाप करने का समय मुझे मिला। उस समय मैंने यही बोला, हम तो नए शिक्षा नीति की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन इतने सारे हमारे यहाँ प्राइवेट ये जो स्कूल्स हुए हैं, प्राइवेट विशेषतः प्राइवेट, उसके साथ साथ सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट स्कूल, जहां शिक्षक शिक्षिका इंग्लिश में बात करते हैं, आग्रह करते हैं पेरेंट्स जो छात्र छात्राओं को केवल इंग्लिश में बात करो। अगर वो इंग्लिश छोड़ के दूसरी भाषा में बात किया तो उनके ऊपर दंड लगा के, फाइन लगा के दुर्धन कमाते हैं। ये हमारे दुर्दशा। विदाउट टेकिंग मच टाइम, जो 5 भाषा का जो राघव मित्तल जी ने बताया है, जो है हमारे दाहिने उंगली में, दाहिने जो हाथ, राइट हैंड, राइट पाम किया तो जो छोटी उंगली जिसको संस्कृत में कनिष्ठिका बोलते हैं, वो हमारी मातृभाषा का प्रतीक है। उसके बगल में जो दैट इज रिंग फिंगर, जो इंग्लिश में बोलते हैं, अनामिका जो संस्कृत में बोलते हैं, जो है वो क्षेत्र भाषा है। जो लोकल जो है उनके लिए मातृभाषा क्षेत्र भाषा दोनों एक ही। और जब हम देश के सीमा के अंदर है, हमारे मध्यमा सबसे लंबा उंगली जो है वो देश बाहुल्य भाषा, वो है हिंदी। देश बाहुल्य भाषा तो उसको हम आग्रह पूर्वक संस्कृतमय करना है, क्योंकि हमारे ये जो है हमारे जो विरासत कहिए, ट्रेडिशन कहिए, जो बचाना है। संस्कृत जो है जो 3 ही जो है 3 ने जो है हिंदू और इंडियन कल्चर, हिंदू संस्कृति, इंडियन कल्चर, the Yahudi or Jewish culture, and third is Chinese culture. These are the only 3 civilizations which are existing right from the beginning and even today. तो इसलिए ये जो ये है हमारे मध्यमा और मिडिल फिंगर, ये है देश बाहुल्य भाषा, ये हिंदी का प्रतीक है। और ये जो हमारे तर्जनी या सी फिंगर, वो हमारे ये जो है विश्व बाहुल्य भाषा, वो आंग्ल भाषा, ये अंग्रेजी को दिखाता है, डिनोट करता है। और ये जो छोटा मोटा तगड़ा हमारा थंब, अंगुष्ठिका जो बोलते हैं, वो हमारे जो मातृभाषाओं की माता, प्रमातृभाषा अर्थात संस्कृत का प्रतीक है। सिर्फ मातृभाषा, क्षेत्र भाषा, देश बाहुल्य भाषा, विश्व बाहुल्य भाषा और प्रमातृभाषा, इसमें सब आता है। हम केवल ये जो है केवल इंग्लिश के पीछे करके हम अपने आप को, हमारे यहाँ संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे यहाँ इतना सारे जो है परिसर के जो प्रेम परिसर के साथ ये जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, सब ये जो है, ये जो स्वस्थ क्या है, स्वस्थ शब्द हेल्थ का ये जो है स्वस्थ सेल्फ एग्जिस्टेंस, अर्थात हमारे आंतरिक ये जो है प्रकृति, इंटरनल नेचर, जब वो एक्सटर्नल नेचर बाह्य प्रकृति के साथ संपूर्ण तालमेल है, तब वहां कोई ये जो कोई इसमें ये नहीं है, विषमता नहीं है। तो इसलिए वो तो दैट रिप्रेजेंट्स हेल्थ कंप्लीट ये जो है। तो ऐसे करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मुझे मेरा विचार व्यक्त करने के लिए। तो मैं बाकी लोगों का भी सुनने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाषाई समग्रता का जो एक समुच्चय आपने प्रस्तुत किया है,
तो जो कहते हैं ना कि भारतवर्ष में भाषा का संग्राम है, इसमें संग्राम का तो कहीं कोई महत्व है ही नहीं। मातृभाषा, क्षेत्र भाषा और राष्ट्रभाषा, देश बाहुल्य भाषा, विश्व देश बाहुल्य बाहुल्य भाषा, भाषा, विश्व बाहुल्य भाषा, क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है, जी जी, इसलिए देश बाहुल्य विश्व भाषा, बाहुल्य भाषा, विश्व बाहुल्य भाषा और प्रमात्र भाषा। तो इसमें तो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संग्राम है ही नहीं। अब हमारे साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा अमिताभ नाग जी को, जो कि भाषिणी के मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं और तकनीक के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो भाषाई स्वरूप है, उसका एक बहुत ही सुंदर प्रयोग और बहुत ही दृढ़ता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। और भारत का ये जो भाषाई प्रश्न है, 5 भाषाओं का जो सीखने का उपक्रम है, हम उत्तर भारतीय लोगों का भाषाई इंडेक्स सूचकांक जो है वो थोड़ा न्यून रह जाता है, क्योंकि हम हिंदी में ही सब कुछ करना चाहते हैं, कोई और भारतीय भाषा नहीं सीखते। 5 वर्ष खड़गपुर में रहने के बाद भी केवल इतनी सी बांग्ला सीखी, अमी बांग्ला जानी ना। तो मैं प्रोफेसर देसाई के सम्मुख एक प्रस्ताव भी करना चाहूंगा, जो निवेदन, क्योंकि उनकी बात बहुत शीघ्रता से पहुंच पाएगी, कि जो सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, अगर बाह्य क्षेत्र से कोई छात्र वहां आता है और आधे दशक का एक लंबा यात्रा वहां रखता है, तो जो प्रथम वर्ष में अगर उसको एक फंक्शनल लेवल वहां का जो लोकल लैंग्वेज है, अगर मैं आईआईटी मद्रास गया तो मुझे फंक्शनल तमिल सीखने का एक मौका मिल सके, और मैं बंगाल अगर गया तो अमी बांग्ला जानी ना वो लेकर ही ना लौटूं। नहीं, उसको थोड़ा परिवर्तन कि हमें अल्प बांग्ला जानी, ऐसे बोलने से वो बहुत और पॉजिटिव होगा, रादर देन अमी बांग्ला जाने ना। कर्नाटक में भी कन्नड़ गोत्तिला ऐसे बोलते हैं, तो मैं उन सब परिवर्तन करने का प्रयास करता हूँ। कन्नड़ गोत्तिला अर्थात अमी बांग्ला जानी ना, ऐसे के मैं बहुत कम कन्नड़ जानता हूँ, ऐसे बोलने का प्रयास करें। तो मैं निवेदन करूंगा अमिताभ नाग जी को कि किस प्रकार से भाषिणी का जो तकनीकी प्लेटफॉर्म है वह भारत को मल्टीलिंग्वालिज्म में, हम यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट्स पे जाएं तो वहां बहुत एक प्राइड के साथ में, गर्व के साथ में वो कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो भाषा है वो बहुभाषा है, वी स्पीक इन मल्टी लैंग्वेज। और उसी की तरफ अमिताभ नाग जी का जो भाषिणी है वह भारत को लेकर आगे जा रहा है। Let's hear what Amitabh Nath ji has to say on World Education Forum. Over to you, sir. Thank you for the opportunity. In fact, I had, some meetings coming up, so I thought that I'll just join and, contribute what I can before I sign off slightly early on this. But see, हमारा जो प्रयास है और जो हमारा आगे चल के काम करने का विचार है वो यही है कि हम लैंग्वेज को किसी भी तरह से बाधा ना बनने दें किसी भी काम पे। एंड उसके लिए एक कई चीज़ें जो हम कर रहे हैं कि हम देश के नागरिकों की तरफ भी एक ध्यान होता है कि हमारे पास डिफरेंट पर्सोना है जो कि डिफरेंट काम करते हैं। एक तबका है जो कि एजुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग है, जो कि इंग्लिश समझता है, जानता है, दूसरी लैंग्वेज भी समझता है, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट एक तबका है जो अपनी मातृभाषा जानता है और बट वो पढ़ लिख सकता है, तो वो अपनी भाषा में काम कर सकता है। और एक तबका है जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता और एजुकेशन लेवल भी काफ़ी लो है। सो एंड वो अपनी एक भाषा जानता है, दूसरी भाषा नहीं जानता। तो there is a wide variation or diversity in our culture which is there. Now, what in Bhashini we are trying to do is that, of course, it is a national language translation mission, but our mission line states transcend the language barrier. हम language barrier को पार करके आगे निकलें और कुछ और करें। तो इस डायरेक्शन में हमारी कुछ बेसिक सर्विसेज हैं। हम कंप्यूटर को आपकी वॉइस से लैंग्वेज समझना सिखाते हैं। तो हम अभी 12 लैंग्वेज में कंप्यूटर हमारा जो आप बोलेंगे वो समझ सकता है। ऑब्वियसली इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, देयर इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑलवेज देयर, बट वो 12 लैंग्वेज में समझ सकता है। दूसरा, कंप्यूटर को हम टेक्स्ट टू स्पीच करवाना चाहते हैं, जो टेक्स्ट में उसने एनकोड कर रखा है वो स्पीच में कन्वर्ट कर सके। तो वो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है। और फिर हम मशीन ट्रांसलेशन करते हैं, एक लैंग्वेज अगर एनकोडेड है टेक्स्ट में तो दूसरे लैंग्वेज में डालते हैं।
अब इससे हमारा आप देखिए कि हमारी सिचुएशन जो है ये सिंपल सर्विसेज है, उसके बाद हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करते हैं जो कि प्रिंटेड टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करे और उसको कंप्यूटर के टेक्स्ट में डालें ताकि वो कंप्यूटर समझ सके और उसके बाद प्रोसेस कर सके। हम जब उस डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं विच इज स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड टेक्स्ट टू स्पीच, अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो हम स्पीच टू स्पीच पहुंच जाते हैं, राइट। और इस कारण हमारी ऑफरिंग बड़ी पावरफुल हो जाती है। तो क्या किस तरह से पावरफुल हो जाती है कि हम इससे काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप किसी दूसरी लैंग्वेज में सुन सकते हैं, थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि प्रोसेसिंग डिले है तो वो होगा। आप किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप इस सिस्टम में डालें तो जो लैंग्वेज आप बोलेंगे उस लैंग्वेज में बोल सकता है वो, राइट। आप कई यूज केसेस ऐसे हैं, जैसे अभी हमने एक यूज केस लॉन्च किया था एनपीसीआई के साथ। आप वॉइस बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मम्मी को पैसे भेज दो, तो वो आपका एक बहुत बड़ा यूज केस हो जाता है। उसके बाद हम कुछ यूज केसेस ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि फास्टैग चार्ज कर दो, मोबाइल रिचार्ज कर दो। तो जब हम ये सब करने लगते हैं तो हम एक तबके के पास पहुंच जाते हैं जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानता और बोल के मशीन से काम करवा सकता है। अब जब हम इस सिचुएशन में पहुंचते हैं कि बोल के मशीन से काम करवा सकते हैं तो हम इंक्लूसिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बोल के उनसे ये कह सकते हैं कि ऐसा काम करो। एंड जो इंक्लूसिविटी लास्ट माइल में आती है, क्योंकि उनका जो है उन्होंने बोलना मतलब इफ दे डोंट नो हाउ, अगर वो डिजिटली डिवाइड में है या लिटरेसी डिवाइड में है तो दे कैन स्पीक आउट एंड गेट द थिंग्स डन। तो इस सिचुएशन में जो हम पहुंचते हैं, इट इज़ अ वेरी बिग सिचुएशन फॉर अस एंड वी कैन हैव मल्टीपल यूज केसेस। तो हमने, जैसे मैंने आपको कहा कि वॉइस बेस्ड पेमेंट किया है, बैलेंस चेक किया है, तो हम जो है अभी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हैं जिनके साथ हम काम कर सके। और डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन और वीडियो ट्रांसलेशन तो एक लो हैंगिंग फ्रूट है कि आपको डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दूं और वो आप ट्रांसलेट करें तो कितना एरर रेट होगा। तो वो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है जिसको कि हम X% कह सकते हैं अभी की तारीख में, और जब डेटा और बढ़ेगा तो वो 100% के पास भी पहुंच जाएगा। बट ये जो दूसरे यूज केसेस हैं जिसमें कि आप एक इंडिविजुअल रोजमर्रा के काम जो है वो अपनी भाषा में कर सके, राइट, दैट इज द यूटोपिया वी वांट टू रीच। कि आपको फॉर एग्जांपल लीगल हेल्प चाहिए, राइट। पहली चीज आपको आपका मतलब पासपोर्ट खो गया। अब कई लोगों को ये नहीं होता कि क्या करना चाहिए, राइट। तो अगर वो चैटबॉट पे बोले मेरा पासपोर्ट खो गया, और अगर चैटबॉट आपको उनकी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में बोले, तेलुगु में बोले कि चैटबॉट पासपोर्ट खो गया, और वो जाके ड्राइविंग लाइसेंस खो गया, और वो जाके बता दे कि आपको ये नॉन इनकॉग्निजेबल FIR लॉन्च करनी है और आप इस यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो देन इट इज़ अ बिग बिग चेंज विच विल हैपन। अगर कोई जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता और सिर्फ बोलना आता है, उसके साथ कोई आप बीती हुई है और वो थाने में FIR लिखना चाहे, तो उसके पास एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें कि वो वहां जाके बोल सके कि मेरे साथ ये आप बीती हुई है, और वो कंप्लेनेंट FIR लॉन्च हो जाए। आज की तारीख में वो आईओ को बताते हैं और आईओ लिखते हैं, तो वो एक दूसरी तरीके की चीज हो जाती है। तो इन डायरेक्शंस में हमारा काम है। हमारा यूजर ऑर्गेनाइजेशन से यही दरखास्त रहती है कि आप हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो, और शामिल होकर आप काम करने की कोशिश करें जिसमें कि हम मॉडल्स को आपके हिसाब से ट्रेन करें। देखिए, बोलचाल की भाषा का एक अलग AI मॉडल, एक अलग तरीका होता है। बैंकिंग की अपनी ग्लॉसरी होती है जिसमें कि अपने शब्द होते हैं जिसको कि मॉडल में ट्रेन करना है। अगर आप लीगल में जाएंगे, नियम कानून अपने होते हैं। गवर्नमेंट में जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी अपनी होती है। तो हमें मतलब काफ़ी काम करना है, और वो काम जो है इसी तरीके से हो सकता है कि हम यूज़र ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के डेटा कलेक्ट करें, मॉडल ट्रेन करें और वो करें। तो हम जब भी आज की तारीख में हम किसी से भी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाइए।
2-3 महीने में आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आपका एक एक करके यूज केस सॉल्व होगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इमेजिन करते हैं कि हमारे जो मॉडल्स हैं वो वर्जन 1 वर्जन 2 या इस तरह की चीज़ों में काम करने लगेंगे और काफ़ी और चीज़ें बनने लगेंगी। ये तो एक एक हो गया जिसमें कि एक पिलर हो गया जिसमें कि हमको काम करना है। और एंड एवरी individual who wants to be part of this journey, or every organization who wants to be part of this journey, we invite them to be working with us, and be contributing to it. The second thing is कि हम अपने मॉडल्स में और भी इजाफा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें रिसर्च की सब्जेक्ट है कि आपने 2 वर्ड टाइप किए और क्या मशीन लैंग्वेज डिटेक्ट कर सकता है। आज की तारीख में अगर आप हमारे एप्लीकेशंस देखेंगे तो उसमें सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज हमें अपने आप बताना पड़ता है, पर क्या हम डिटेक्ट करवा सकते हैं। जब हम बोलने लगे तो क्या कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सकता है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ? तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ इट, राइट। अब हम 5-6 लोग हैं, हम अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम ऐसा बन सकता है कि आप जो बोल रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज अगर अलग है तो वो आपको ये फैसिलिटी दे कि वो आप उसी लैंग्वेज में बोले और मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, और फिर भी हम एक दूसरे को समझ सके और एक हम मल्टीलिंगुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें। हमारी डायरेक्शन में और फीचर्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें आएंगी, राइट। अभी आप लैंग्वेज टेक्नोलॉजी देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं, उसमें प्रोफैनिटी इनबिल्ट होती है, तो हमने प्रोफैनिटी को सप्रेस किया है क्योंकि दिस इज अ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड वी डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स। सो ये सारी चीज़ें आएंगी एंड दीज आर द फीडबैक्स वी आर लुकिंग फॉर फ्रॉम द सिस्टम एंड पीपल सो दैट देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट। हमारे कुछ यूज केसेस मार्केट में हैं, कुछ और डेवलप हो रहे हैं, कुछ और अनाउंसमेंट्स आप देखेंगे, और in future I hope that we will be able to serve the country better towards inclusivity and empowerment. I think this is truly terrific. The way Navik has become the indigenous platform for the global positioning system, the India's GPS, and UPI has become India's payment system. I think Bhashini is coming forward as the multilingualism platform, और जो पंच भाषाओं का जो प्रारूप प्रोफेसर देसाई ने प्रस्तुत किया, वह संभवतः भाषिणी के माध्यम से द lovely tech enabled platform what Bhashini is coming forward, so that will come to a reality. I think we come to the close of I would like to bring in Madam Nirupama Soundararajan about the inclusivity aspect what Amitabh Nag Saab just mentioned about, and just 2 cents of her policy impact, because जो अंत्योदय की बात है कि reaching to the last mile, उसका जो policy impact है, I would request Nirupama Soundararajan ma'am to just comment upon it, and then we will wrap up the day 3 of the proceedings, जिसमें कि localization, regionalization, जिसको बहुत, और वैश्वीकरण भी, कि भारत कभी भी कूप मंडूक रूप से नहीं रहा। हम विश्व बाहुल्य आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः की भी बात की, और हमने अपने मातृभाषा की, अपनी जो निज संस्कृति है उसको भी लिया। I think that is the integral humanism which India is marching further and forward. So, Nirupama Soundararajan ma'am. Thank you. No, it was very interesting to listen to Shri Desai and Shri Nag in terms of the importance of language in terms of and language inclusivity. I think that has also been a big constraint from a development agenda, right? I mean, communication, it all starts with good and effective communication. And Mr. Nag was talking about using how you're able to translate and with a lag. This has been something that we've been using humans to do. If you see UN, anytime there's a UN meeting while somebody is talking, you have multiple interpreters sitting there and actually translating as you go on. Now, the fact that today we are technology enabled can actually convert that process. So the use cases already exist and it's been there in human form. Now it's a question of converting it into technology. But I think it's important. And I think it's very, very important because if communication is the key, and we have to keep in mind that there are different types of communication languages. So it's not just, the 22 official languages that exist, but there are also dialects, there are accents. Especially if you're doing speech to text conversion, it's the entire thing of how do you capture accent. There are many funny videos where
while the speech to text can happen and it's able to, but if you don't understand the accent, if you're not able to localize it to that level, it again defeats the purpose. And I think that's where we have the chance to innovate and do so much. And I think once we are able to crack this in terms of dissemination of whatever, whether it is something as basic as enabling services which are speech activated, or whether it is something in terms of just making sure people have access to information that they can read in language which is not intimidating, not just what kind of language, but language which is not intimidating. If communication is the key, not everything has to be presented in proper, ठेठ, formal language. Sometimes conversational language bhi bahut zaruri hai so that people understand it better. And I think that's a big part, because I think today if you look at even website accesses, most of them अंग्रेजी में है, हिंदी में होगा, and some of them जो regional presence ज़्यादा है तो regional languages आ जाता है. But otherwise it's still not with businesses now expanding from beyond just a limited geographic location to a pan-India bit. Language and language inclusion becomes very, very important. And I think the government has to be thinking along those lines. Thank you. Thank you. हाशिनी ने कहा कि बॉटम ऑफ द पिरामिड पे बोलचाल की भाषा में किस प्रकार से हम भाषाई रूपांतरण कर सकते हैं, बट एट द टॉप ऑफ द पिरामिड, एंड ये मेरा प्रश्न और अंतिम की प्रोफेसर देसाई से कि AICTE केम विद अ प्रोपोजिशन एंड इवन UGC इज वर्किंग हार्ड कि टेक्नो मैनेजरियल एजुकेशन जो है वह भारतीय भाषाओं में हो, और 14 संस्थान प्रारंभ में आए जिसमें उस समय कोई भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या प्रबंधन संस्थान नहीं आ पाया. तो मैं हमारे जो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, अब तो हर राज्य में हमारे सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज द प्रिपेयर्डनेस ऑफ आवर टॉप इंस्टीट्यूशंस टू प्रोवाइड टेक्नो मैनेजरियल एजुकेशन इन द रीजनल लैंग्वेजेस? What kind of experimentations are perhaps going on, and especially in the, I would say, on the lovely campus of Dharwad, Professor Desai? So you have to unmute here, just to. You have to unmute, sir. ठीक Yeah. है. हाँ, तो मेरे सहोद्योगी प्रोफेसर गोपाल पराशरी IIT कानपुर से ड्यूअल डिग्री बीटेक केमटेक, तत्पश्चात PhD भी IIT कानपुर से. तो अभी IIT धारवाड़ में मुझसे बहुत अधिक अवधि से IIT धारवाड़ में है, और IIT धारवाड़ में भाषा का ये देखते हैं. तो हम इसलिए तो मैं उनको थोड़ा एक हमारे IIT धारवाड़ में क्या एक्चुअली इंडियनाइजेशन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट, उस विषय में क्या क्या प्रयास चल रहे हैं, उस विषय में थोड़ा सबको अवगत कराने के विद द परमिशन ऑफ राघव मित्तल जी, मैं गोपाल पराशरी जी को एक्चुअली आपके अनुमति से वो गोपाल पराशरी जी IIT धारवाड़ में क्या क्या काम हो रहा है उसके विषय में आपको अवगत कराएंगे. जी धन्यवाद महोदय. नमस्ते टू ऑल. तो हमारा थोड़ा सा प्रयास है, जो जैसे अभी निरुपमा मैम भी कह रही थी कि जब हम टेक्स्ट स्पीच से टेक्स्ट और टेक्स्ट से स्पीच पे जाते हैं, उससे रिलेटेड है. जैसे हम भारतीय भाषाओं को जब हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, लिपि में, तो वहां पे लिप्यंतरण या फिर ट्रांसलिट्रेशन दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो उस दिशा में हमने सोचा है. क्या होता है कि जब हम नॉर्मल लिप्यंतरण करते हैं, भाषा ये जो ट्रांसलिट्रेशन करते हैं, तो उसमें एम्बिग्विटी आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ धारवाड़ इटसेल्फ. धारवाड़ को हम अगर हम लिखेंगे वे वी राइट capital D, small h, small a, r, small w, small a, small d. It can be mapped to 16 different things in Hindi or Indian languages. तो उसको उसकी स्पष्टता लाने के लिए, उसकी एम्बिग्विटी खत्म करने के लिए, तो हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम बने, मैकेनिज्म बने ट्रांसलेटेशन की. तो दिशा में धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी भाषा के लिए, और जैसे कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हम लोग अभी सब जानते हैं और अभी बात भी हो रही थी, तो सरलता, स्पष्टता और ये शुद्धता, ये तीनों चीजें आवश्यक है. तो उसी दिशा में हम लोग थोड़ा सा प्रयास किया है, तो जिससे कि हम 1-to-1 मैपिंग हो पाए, कि जिससे कि जो हम बोल रहे हैं उसको हम प्रॉपरली ट्रांसलेट कर पाए. तो हाँ, जैसे वही जो है, जैसे प्रोफेसर गोपाल जी ने बताया, DHA जो है, DHA उसको ध भी हो सकता है, धा भी हो सकता है, ढ भी हो सकता है, ढा भी हो सकता है. उसमें 4 कॉम्बिनेशंस है. Similarly, WAD, वद, वाद, वर्ड, वाड.
तो ऐसे जो 4/4 16 होता है, उसमें केवल एक सही है, दैट इज धारवाड़, बाकी 15 गलत है। लेकिन हमारे यहाँ अनरिटन रूल क्या है, पहला अक्षर इंग्लिश जब लिखते हैं, फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल लेटर्स। इसके कारण बहुत कुछ होता है। से मैंने ऐसे एक सामान्यता जो होने वाले गलतियों का है, जो रिसेंटली अब जो हो रहा है, तेलंगाना, गाना जो है गाना, तो उसमें स्वर में ये जो है गाना जो है ANA, अगर हम पहले टी को छोटा लिखे, क्योंकि त है, त त द ध न, दंत वर्ण, और उसके बाद बाकी अंतिम 3 जो का अक्षर जो है ANA, उसको बड़ा लिखे, कैपिटल लेटर्स में लिखे, तो जो स्पष्ट रूप से उसको तेलंगाना ऐसे आप मैप कर सकते। नहीं तो ये नहीं होने के कारण गाना को गाना बना लिया आजकल, तेलंगाना गाना ऐसे उससे भी बहुत ऐसे, जैसे हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन उनकी नाम है, लेकिन रामन उसको बहुत बार इवन इंक्लूडिंग संस्कृत के न्यूज में, जिसमें थोड़ा परिवर्तन करके भी सुभाषितम करके सुप्रभातम करके कार्यक्रम बनाया है DD न्यूज में इन द मॉर्निंग फ्रॉम 7:15 to 7:30, तो उसमें रामन को अधिकांश समय रमण ऐसे गलत है जो है लिप्यांतरण किया जाता है। रमण जो है R, आप R कैपिटल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, स्मॉल a, स्मॉल m, स्मॉल a, देन N कैपिटल M, वो रमण है। रामन है तो R के बाद जो A आता है वो कैपिटल होना चाहिए, MAN तीनों छोटा होना चाहिए, रामन, रमण। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली स्वर में ए जो है स्मॉल लेटर्स रिप्रेजेंट लघु या ह्रस्व, कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंट गुरु या दीर्घ, और व्यंजनों में कॉन्सोनेंट्स में दंत वर्ण त थ द ध न स्मॉल लेटर से लिखना है, थ और ध उसमें H भी छोटा लिखना है, थ इज THA, ध इज DHA, स्मॉल d, स्मॉल h, स्मॉल a। सिमिलरली इसमें मूर्धन्य वर्ण में ट ठ ड ढ न, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी, उसके बाद ये ट, कैपिटल T, कैपिटल H A, ठ, कैपिटल D A, ड, कैपिटल D, कैपिटल H A, ढ, और न जो है ये तो कैपिटल N A। ऐसे ये करने धीरे से करके ये तो योग्य जो लिप्यांतरण, सुयोग्य लिप्यांतरण होगा। इसको चाइना वालों ने 40 वर्ष पहले किया। आप सबको पता होगा, बीजिंग का पहले नाम था पीकिंग, तो 40 वर्ष पहले अंडर डेंग जियाओपिंग उन्होंने बहुत सारे, उसमें भी हमारे जैसे बहुत सारे वेराइटीज होंगे, उसको पीकिंग को बीजिंग किया, तो मतलब प से ब, दैट इज जो है ऐसे प प ब भ म ओष्ठ वर्ण में जो है, और क से ग, क से ग के माध्यम से ज, पीकिंग को बीजिंग बना ले। इसके कारण इतने सारे ये जो है, तो काइंड ऑफ ये जो है इन्होंने डेंग जियाओपिंग जो है इन्होंने, मैं तो उनको एक्चुअली बाकी सभी से सर्वाधिक ये जो है चाइना में जो इसकी अनुशासन, सब क्षेत्र में अनुशासन ले आने में डेंग जियाओपिंग का जो महत्तम योगदान है, उसको हम सब ये करके इसको ये करने के हम इसको अलग अलग फोरम के माध्यम से निश्चित रूप से करने वाले हैं। तो जो है transcended the whole dimension of machine translation from saralta to spashtata and shuddhata. Shuddhata and spashtata. I think this is what I think Amitabh Nag Saab under the Bhashani Anvil, where the focus had been to bring about the machine translation, the speech to speech, सरल रूपक से, पर शुद्धता और स्पष्टता का जो रूपक है, क्योंकि भारत में वर्तनी शुद्धि का जो महत्व है, the pedanticity of the language what we have in our civilization की मैं उर्दू का सूक्त है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ. So in India, like in our mantrocharan, in the Vedic rituals, even the intonation, the sound, the force with which we speak. So we are an oral civilization, and we are really so very fortunate to have such a
wonderful national mission, which is laying so much of emphasis on the vocal traditions. And we have seen people at the bottom of the pyramid, they're using voice commands to use the machines. We have seen workers, Vishwakarmas, who are speaking out using the Google Translate to write and they can't type. So they speak out and that machine tool puts that into the script. And we really hope that our national tools, they transcend and they compete with the globally best. और वर्ल्ड एजुकेशन फोरम का जो निहितार्थ था कि भारत से, जो भारत ने विश्व को एक रे दी, एक प्रकाश दिया सनातन काल में, तो आज पुनः भारत एक ऐसे आई वुड से इट हैज कम टू दैट पेडेस्टल वहां पर कि भारत अब पुनः अपनी जो सांस्कृतिक और सभ्यतागत जो हमारे अधिष्ठान हैं, जो कि हमारी भाषाओं में ही है, जो इंडिक ओरिजिनल्स की हम बात करते हैं, जो हमारे वास्तविक हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वह पूरे विश्व उनसे लाभान्वित हो। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः का ऋग्वेदिक भाव के बाद में भारत से, भारत की जो मूल भावनाएं हैं, वह पूरा विश्व सीखे। आई थिंक सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल एक्सपेरिमेंटेशंस पूरे भारतवर्ष में जो नवाचार हो रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुरभि टू पास ऑन द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स। So on the third day of the World Education Forum 2024, when we have talked about regionalization, localization, and language, multilingual efficacy and delivery at the techno-managerial institutions, the governmental, interventions with the institutions, academia, and how we can, create efficacy in delivery. Thank you so much to Nirupama Soundararajan Madam, Professor Desai Sir from IIT Dharwad, and Sir Amitabh Nag ji from Bhashini. We thank you all the dignitaries, the Samans, who have taken out precious time from their schedules and deliberated such deep and profound words of wisdom for our distinguished audience. Once again, thank you from Rethink India. Thank you. Thank you. Thank